Radhe Radhe, Jai Shri Krishna. Now, today we learn about the user interface of MIT Inventor. User interface होता क्या है? बेसिकली जब भी हम किसी ऐप को या किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो जो भी फर्स्ट स्क्रीन आपके सामने आती है या उससे रिलेटेड और भी जो स्क्रीन है जिसका यूटिलाइजेशन हम करते हैं उसको बोलते हैं यूजर इंटरफेस. नाउ टुडे वी लर्न अबाउट द यूजर इंटरफेस ऑफ MIT इन्वेंटर. In previous video, we learned what is MIT Inventor. Basically, it is used for creating the app. Now we see how we work on the MIT Inventor and how it will be look and feel. So now go to the screen. See, this is the user interface of MIT Inventor. See here, MIT Inventor. After MIT Inventor, there is a project. Now what is project? When we click on the project, you see there is the option of the my project. In my project you can see the saved project. Like if I click, now see here, hello, there is one project whose name is hello. Again click on the project, there is a start new project. If you want to create a new project or new app, then we click on the start new project. Import project, export project, there are some options available in the project section. Now second option is connect. This is used to run the app. जब हम ऐप बना लेंगे और उसको हमें रन करवाना होगा, इसके लिए हम यूज करते हैं कनेक्ट ऑप्शन. सो देयर इज द ऑप्शन AI कंपेनियन. बेसिकली AI कंपेनियन इज द ऐप जिसके थ्रू से हम यहाँ पर जो ऐप बनाएंगे उसको आप अपने मोबाइल पे या टैबलेट पर चला सकते हैं. Again there is a build section. Now in build section there are two options, Android app and Android app bundle. That is the APK. अगर आपने जो ऐप बनाई है आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड शेयर करें या कोई और उसको यूटिलाइज करे तो आप APK बनाकर शेयर कर सकते हैं. अगर आप पूरा कोडिंग के साथ ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं सो यू कैन मेक द एंड्रॉयड ऐप बंडल. नाउ देयर is a setting option. So we can change the setting of user interface setting, disable project auto load, enable open. All these are changed from the setting. Now there is a help option. So we can take the help of the MIT Inventor. Already have the libraries, some extension are there, tutorial are there. We can utilize this for our help. Okay. Now after that there is a option. These all options are related to the project. Now we go to the user interface. See here, this is our user interface. Now this is the palette section. See here, palette. So there are main four sections. One is the palette, one is the viewer, one is the component, and one is the property section. Now first we see that what is the palette. In palette it collect ऑल दी कंपोनेंट. जितने भी कंपोनेंट्स MIT इन्वेंटर है वो सारे कहाँ मिलेंगे आपको? पैलेट सेक्शन में. उसके बाद आता है व्यूअर सेक्शन. जो हम ऐप बनाएंगे वो कैसे दिखेगी, वो सारा डिजाइनिंग पार्ट जो है वो आपको कहाँ दिखेगी? व्यूअर सेक्शन पे. यहाँ पे हम स्क्रीन डिजाइन करते हैं किसी भी ऐप की. इसके बाद आता है कंपोनेंट सेक्शन. तो जो जो कंपोनेंट्स आप इस स्क्रीन पे रखोगे वो सारा आपको यहाँ दिखेगा. जैसे अभी आपको स्क्रीन 1 दिख रहा है बिकॉज वी टेक स्क्रीन 1 ऑन द व्यूअर. ऐसे ही ये जो प्रॉपर्टी सेक्शन है इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिलेक्टेड कंपोनेंट. जैसे अभी हम स्क्रीन 1 पे क्लिक करेंगे ये स्क्रीन 1 की प्रॉपर्टीज आ गई. स्क्रीन 1 अलाइन हॉरिजॉन्टल, अलाइन वर्टिकल, बैकग्राउंड कलर. इफ यू वांट टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द स्क्रीन सो वी कैन चेंज द बैकग्राउंड कलर फ्रॉम हियर. तो ये जो सारा है प्रॉपर्टी सेक्शन है. अगर आप बैकग्राउंड में इमेज को डालना चाहते हैं तो आप इमेज भी डाल सकते हैं यहाँ से. सो फॉर दैट वी कैन अपलोड द इमेज. नाउ come to the next media section. ये यहाँ पर जो है ये है मीडिया सेक्शन है. मीडिया सेक्शन से हम किसी फाइल को अपलोड कर सकते हैं लाइक ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल और एनी इमेज. MIT Inventor contain only JPG और PNG images. Now see, this is our palette section. Now a palette section is again divided into the sections and drawer. This is user interface, layout, media, drawing and animation,
मैप्स इन ईच, हर एक सेक्शन में आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स दिख जाएंगे। ये सारे कंपोनेंट्स जो है वो किसके हैं, यूजर सेक्शन के हैं। इसके बाद लेआउट सेक्शन, ये जो कंपोनेंट्स वो लेआउट सेक्शन के हैं। तो to design the app we need all these components one by one. According to the need we can utilize the components. Now what is the use of this rename and delete? So if we take a component, अगर हमने कोई component लिया है, like see I take the component. Now what happen where our component goes? This side. Okay, we understand what is this in next video. Now I take button here, again I take one button here, but I doesn't need button number 2, so I click on the button 2 and I click on the delete the component. If I want to rename this button 1, then I click on the button 1 and I click on the rename. Now the question is arises why we rename this button. In the app there are lots of buttons or other components available, so to identify we rename the components. Okay, in this way we can rename the component. Now how to upload the file? Go on the media, click on the upload file, then choose the file, select any picture. Now click on the OK. So whenever you require this image you can utilize, like in the screen 1 we can save this image as a background. So click on the upload file. I think an image will be shown here but it is not now. So click on the upload file, choose the image. Now click on the OK. It doesn't show any image now. Choose the file. So again I click here. OK. Now see, this is the image. In this way we can upload the image also. Okay, understood the interface of MIT Inventor. There is two other options available. One is designer, one is block view. This designer view is used to design it, and the block view is used to give the coding to the app. Now from this add screen we can add the another screen, like screen number 2. We can give the name of the screen from here, then click on the OK. Now the other screen will be open. So this is a user interface of MIT Inventor. If you have any question then you can ask. Thank you. Have a nice day.